Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are in the third A group elements of fourth A group elements. Yesterday I was explained about the allotropic forms of the carbon. I think in that crystalline allotropic forms are over. Or diamond and graphite. I think these two allotropic forms I was completed. Once again I am repeating this. What is the allotropy? Allotropy. Allotropy is nothing but the existence. Allo means different. Tropy means forms. One element is exist in two or more forms. So existence of the one element in two or more physical forms with almost all same chemical properties. That phenomena is known as the allotropy. Carbon exhibits the carbon is present in the various allotropic forms. Among them, some are crystalline forms are there and some are non-crystalline forms. In the crystalline forms, diamond is there. Diamond, and second form is the graphite. Graphite is the second one. Third one is the fullerene. Fullerenes. Okay, these are the three crystalline forms are there, which are there in our syllabus. Non-crystalline forms: coal, coke. Okay, wood charcoal, animal charcoal, gas carbon, and lamp black. All these are the non-crystalline forms or amorphous forms. Now, among all this, we have to study about this one: diamond, graphite, and fullerenes. These are important for your examination point of view. What is diamond and what is graphite? I was explaining in last class. Once again, I am repeating this. Diamond is the precious stone. You know that in the diamond, carbon undergoes sp3 hybridization in the first excited state. As a result of that, on that carbon, 4 hybrid orbitals are formed. What is the hybridization of this carbon? sp3. What is the hybridization of this? sp3 only. Each and every carbon undergoes sp3 hybridization. As a result, 4 hybrid orbitals are formed on each carbon. Those hybrid orbitals once again overlaps with the remaining carbon atoms. ऐसा remaining carbon atoms से overlap होते ऐसा you will get the three-dimensional polymeric network shape. Between the carbon and carbon, single covalent bonds are present. Therefore, it is the strongest material and having more melting and boiling point values. So all our binded electrons are present. Therefore, it is the insulator of electricity. डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है. इसको ज्वेलरीज में यूज करते हैं. और इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स. सो इसको कटिंग मटेरियल के ऐसा ग्लास और लोहे को कट करने के वास्ते डायमंड को यूज करते हैं. एंड इसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रम्स है. बॉन्ड एंगल 109 डिग्रीज रहती है. यू नो दैट. So this is about the structure of the diamond and uses of the diamond and properties of the diamond. There graphite के बारे में समझा रहे हैं बेटा. Graphite. In the graphite, carbon undergoes which hybridization? sp2 hybridization. So on each carbon, how many hybrid orbitals are formed? 3 hybrid orbitals are formed. And see that I am writing the atomic number of the carbon 6, 1s2, 2s2 and 2p2 is the electron configuration. This is the 2s2. 2p2 दो ऑर्बिटल्स में ये है. एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है भाई. 2s1 2p3. ये देखिए 2s1 है, ये 2p3 1 2 3. यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? इट अंडरगोस व्हिच हाइब्रिडेशन? sp2 ओनली. इट लेफ्ट वन ऑर्बिटल. एक ऑर्बिटल को छोड़ देता है. यहाँ पे छूट गया. sp2 हाइब्रिडेशन. दैट मीन्स ऑन ईच कार्बन वन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देयर and on which one electron is present. इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है. देखिए आप, एक ऑर्बिटल को छोड़ दिया हो एंड रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल को मिक्स कर लिया. sp2 हाइब्रिडेशन में गया. 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए. इन लोगों भी रिमेनिंग कार्बन से ओवरलैप हुए. लाइक दिस. ये देखिए ऐसा एक हेक्सागोनल रिंग फॉर्म होता. तो हेक्सागोनल रिंग ऐसा अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ. आप इस तरीके से ड्रा करना. इस तरीके से आपको हेक्सागोनल रिंग्स फॉर्म होते. एक रिंग दूसरे रिंग से जुड़ जाता
one ring and another ring is mixed in this manner and forms the layer. एक layer form होता, फिर layer के नीचे और एक layer भी जमता like this. Okay, it has a layered structure and on each carbon, हर carbon पे एक free electron है. Therefore, it is the conductor of electricity. Due to the mobility of this electron, through this graphite, electricity is passed. So it is the conductor of the electricity. It has a layered structure and between the layers a van der Waals force of attractions are acting. Therefore it is viscous in nature. एक लेयर से दूसरा लेयर स्लिप जल्दी नहीं होता, आहिस्ता चिकट रहता, विस्कस रहता, तो इसीलिए इसको फ्रिक्शन कम करने के वास्ते यूज करते. It is used as the lubricant to reduce the friction because due to this layered structure between the layers, van der Waals force of attractions are present. Because due to the free electron, it is acts as the conductor of electricity. Why graphite is the conductor of electricity? कई बार पूछा. Because due to the presence of the unpaired electron, one free electron is present on each carbon. Due to this reason, graphite is the conductor of electricity. Why graphite is used as the lubricant? Okay, it has layered structure. Between the layers, van der Waals force of attraction is present. Therefore, it is viscous in nature and it is used to reduce the friction. Friction कम करने के वास्ते graphite को use करते. कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ रहता 1.43 एंगस्ट्रॉम रहता and the hybridization of the carbon in the graphite is the sp2 hybridization and graphite is thermodynamically stable than that of the diamond. So this is the two-dimensional polymeric network shape. Graphite में two-dimensional polymeric network shape रहता. Write the differences between diamond and graphite. अगर पूछा diamond and graphite पूछा तो पहले क्या लिखना भाई? It has three-dimensional polymeric network shape. ये कौन सा डायमेंशनल है? two-dimensional polymeric network shape है इसमें. Next, in this carbon undergoes which hybridization? sp3 hybridization. In this carbon undergoes which hybridization? sp2 hybridization. Then between the carbon and carbon, what is the bond length? 1.54 angstrom. Okay, between the carbon and carbon, what is the bond length? 1.43 angstrom is the bond length. Then after that, due to the single covalent bonds, due to the presence of the single covalent bonds, it is the hardest substance and graphite is what? Soft material. Then it is the insulator of the electricity. Insulator, it does not conduct the electricity, does not allows the electricity to pass through this. Next, graphite is the conductor of electricity. It passes the electricity and this is the thermodynamically less stable when compared with the graphite. So these are the main differences between diamond and graphite. ये 4 marks का question है. Write the differences between diamond and graphite. So फिर एक बार repeat कर रहे हैं बेटा. 3-dimensional polymeric network है. 2-dimensional polymeric network. It has a layered structure. In this it undergoes sp3 hybridization. It means what? Carbon undergoes sp3 hybridization. In this carbon undergoes sp2 hybridization. Between the carbon and carbon bond length is 1.54 angstrom. Between the carbon and carbon bond length is 1.43 angstrom. It is having a single covalent bonds and in this because due to that it is the hard material and it is soft one. ये soft है, a layered structure है इसमें. It is the insulator of electricity and it is the conductor of electricity. So it is the hard material and it is the soft one. All these points are over. So these are the differences between the diamond and graphite. Now whenever the graphite rod is heated in the electric arc in the presence of the noble gases, atomization of this graphite rod takes place. Vapors बन जाते, graphite rod के carbon atoms उड़ जाते inert atmosphere में, फिर ठंडे होके एक जगह जुड़ जाते. So whatever it may be, whenever the graphite rod is heated in the electric arc at higher temperature, atomization of that graphite rod takes place. During the setting of that carbon atoms, they are arranged in a manner
तो कार्बन का जो प्यूरेस्ट फॉर्म है वो अरेंज होता, मतलब वो फॉर्म होता, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लोरीन बोल के बुलाते। सो फ्लोरीन इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन। सबसे ज्यादा प्यूरेस्ट फॉर्म कौन सा है बोले तो फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन। मैं एक्सप्लेन यू अबाउट दी फ्लोरीन्स। फ्लोरीन्स में पहले हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, एक सेंटेंस लिखना है भाई। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड, फ्लोरीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय by heating graphite rod, by heating graphite rod in electric arc, in electric arc में heat कर लिए। as a result of that atomization of the this one takes place, वेपर्स बन जाते, फिर सेटल हो जाते कार्बन एटम्स, एंड उसके बाद में फ्लोरीन्स फॉर्म होते हैं। Now then second thing you have to write, ये फ्लोरीन के अंदर कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है ना, what is the hybridization of the carbon? In this fluorine, hybridization of the carbon is the sp2 hybridization. फ्लोरीन के अंदर C60 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। these are arranged in a bulky, मतलब एक बॉल के जैसा अरेंज होते हैं। तो these fluorines look like a football like structure, इसीलिए इनको बकमिंस्टर्स फ्लोरीन्स बोल के बुला रहे हैं इसको। उसके बाद में फ्लोरीन्स के अंदर देयर इज अबाउट मतलब इन द फ्लोरीन्स 6 membered and 5 membered rings are present. There is about 26 membered rings are present, and there is about 12 to 13 5 membered rings are present. ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा, कैसा फॉर्म हो रहा है देखिए। ये 6 membered रिंग है कार्बन का, फिर ये क्या कर सकता है, या तो 5 या 6 membered रिंग से मिलता है, तो ये मैं 5 membered रिंग डाला, फिर एक 6 membered रिंग, ऐसा मिलते 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 टोटल एक बॉल लाइक का स्ट्रक्चर फॉर्म होता, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लोरीन बोल के बुला रहे हैं। तो हाउ मेनी 6 membered रिंग्स आर देयर? देयर इज अबाउट 26 membered रिंग्स आर देयर, more than 12 5 membered rings are present in the C60 molecules. So all these are joined together and they are look like a football structure. Football के ऐसा structure बनता, ओके, बल्कि मास कैसा दिखता, बकमिंस्टर फ्लोरीन्स बोल के भी बुलाते। So what is the hybridization of the carbon in this? sp2 hybridization. And a 6 membered ring may combined with the 5 membered ring or 6 membered ring, but 5 membered ring is only attaches with the 6 membered rings. This is about the structure and explanation regarding to the fluorine. Fluorine के बारे में लिखो बोले तो इतना लिख लेना है भाई आपको। So this is about the fluorine. Next in this chapter another question is there, what are silicates? Silicates क्या होता? What are silicates? Silicates are the naturally occurring mineral substance beta in which SiO4 units are present. SiO4 units है, so naturally occurring mineral compound को silicates बोल के बुलाते हैं। Example रेती है, क्वार्ट्ज है, okay, tridamite है, क्रिस्टोबलाइट है, all these are the examples for the silicate. Zeolite is also example for the silicate. So write the example for the man-made silicate. अगर बोला तो glass is the man-made silicate. Sodium silicate is called as the water glass. How that is prepared? When Na2CO3 is heated with the SiO2. SiO2 से मिला दिए. As a result, you will get the Na2SiO3 known as the sodium silicate, and it is the example for the man-made silicate. Generally, these are the natural occurring material. Naturally occurring silicon minerals in which SiO4 units are present are known as the silicates. Okay, in the silicates SiO4 units are present, in which Si undergoes sp3 hybridization, and around this Si4 oxygen atoms are surrounded. ऐसा टेट्राहेड्रली Si के अतराफ ऑक्सीजन एटम्स ऐसे मिले हुए रहते। This is about the structure of the SiO4 minus unit. और नेचुरली अकरिंग हो गया तो फिर मैन मेडेड सिलिकेट्स के एग्जांपल्स लिखो। तो एग्जांपल क्या है मैन मेडेड सिलिकेट का? एग्जांपल ग्लास इज द एग्जांपल फॉर द मैन मेडेड सिलिकेट।
What is the water glass? That is the sodium silicate. It is prepared by heating the SiO2 with Na2CO3 और Na से भी मिला के SiO2 को गर्म करे तो सोडियम सिलिकेट फॉर्म होता. So this is a example for the man-made silicate. Not only that, cement is also example for the man-made silicate. What are the zeolites? पूछे तो zeolite is also one type of the silicate in which Si जो सिलिकॉन है उसके अंदर थोड़े एल्यूमिनियम रिप्लेस होके रहते हैं. सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थो सिलिकेट इज कॉल्ड एज द जियोलाइट. ओके, जियोलाइट इज द वन टाइप ऑफ द सिलिकेट. तो जियोलाइट को कैटालिस्ट कैसा यूज कर रहे हैं भाई? खास के ZSM5 बोल के एक जियोलाइट है. ओके, ZSM5 इज यूज्ड टू कन्वर्ट द मिथाइल अल्कोहल. मिथाइल अल्कोहल से गैसोलीन को प्रोड्यूस करते. गैसोलीन, मिथाइल अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू द गैसोलीन. गैसोलीन इज द वन टाइप ऑफ द फ्यूल गैस है. फ्यूल गैस है. अमेरिका में मोटर व्हीकल्स में ज्यादा गैसोलीन को यूज करते हैं. तो मिथाइल अल्कोहल से गैसोलीन प्रिपेयर करने में जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो ZSM5 है. ZSM5 is used as the catalyst in the preparation of the gasoline from the methyl alcohol. What is ZSM5? This is the one type of the material, that is the silicate only. It acts as the catalyst. What are the silicates? Silicates are the naturally occurring mineral compounds of silicon. सिलिकॉन के मिनरल्स है वो और उसके अंदर SiO4 यूनिट्स रहते हैं. सिलिकॉन का hybridization in this hybridization of the silicon in this is the sp3 hybridization. Around the silicon 4 oxygen atoms are arranged in tetrahedral manner. This is about the silicates. और शीट सिलिकेट्स वगैरह कई एग्जांपल्स है. सिलिकेट्स के कई टाइप्स है, वो जरूरत नहीं है. सो व्हाट अबाउट द सिलिकेट्स? राइट अबाउट द सिलिकेट्स बोले तो इतना लिखना. व्हाट आर द मैन मेडेड सिलिकेट्स बोले तो ग्लास और सीमेंट लिखना. व्हाट इज द यूज ऑफ द ZSM5 बोले तो ये लिखना. इट इज यूजफुल फॉर द कन्वर्शन ऑफ द methyl alcohol into the gasoline. It is acts as a catalyst. This is about the silicates. Now next, what is dry ice and how it is used? Dry ice क्या है, कैसा यूज करते? What is the poisonous nature of carbon monoxide? ये क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं. What is the water gas and what is the producer gas? ये VSAQs है ये चैप्टर से. We'll see one by one बेटा. फर्स्ट क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे देखिए. व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस किसको बोलते हैं? ये CO2, सॉलिड CO2 विथ ईथर, दैट इज कॉल्ड एज द ड्राई आइस. और ये टू गेट दी लेस टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन के वास्ते, ओके, ज्यादा टेम्परेचर, लेस टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के वास्ते ड्राई आइस को यूज करते. इट इज यूज फॉर द रेफ्रिजरेशन पर्पस. दिस इज अबाउट द dry ice. Solid CO2 with ether is called as dry ice. It is used for cooling purpose, for the refrigeration to bring the less temperature, low temperature. This dry ice is used. What is the toxic nature of the carbon monoxide? Carbon monoxide is the poisonous substance. Already I was explaining you in the environmental chemistry. CO combines with the hemoglobin and forms the carboxyhemoglobin. Strong covalent bond is formed. Due to that, respiration is stopped. Therefore, carbon monoxide is the poisonous substance. ये poisonous gas है carbon monoxide. This is about the second question. Second VSAQ है, इसके अंदर ये dry ice क्या है? What is the poisonous nature of the CO? What is the ZSM5? अभी मैं समझाया, वो भी important है. What is the ZSM5 and how it is used? ZSM5 is used to convert the methyl alcohol into the gasoline. तो ये और एक VSAQ हो गया. नो देन उसके बाद में what is the water gas and producer gas? Water gas and producer gas. Water gas is a mixture of a CO and H2. CO and H2 का मिक्सचर है भाई. 40 to 50% ये रहता और ये 55 to 40% ये रहता, थोड़ा इधर उधर होता. And it is the blue color, it is the gas, a mixture of the CO and H2 is called as the water gas. It is prepared during the coal gasification. सुपरहीटेड कोल, खूब गर्म करे से कोयले पे से, कोल पे से आपको वाटर वेपर्स पास करते हैं, मॉइस्चर को पास कर लेते हैं.
As a result of that, you will get the mixture of CO and H2. It is called as the water gas. It is prepared during the coal gasification reaction, and it is burns with the blue colored flame. That's why it is also called as the blue gas बोल के बुलाते हैं. And it is also called as the synthetic gas बोल के बुलाते हैं. Synthetic, it is used in the industries for the synthesis of so many metallurgy में भी यूज करते हैं. कई किस्म के प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के अंदर जो टेम्परेचर लाना है उसके वास्ते ये फ्यूल गैस को यूज करते हैं, इसीलिए इसको सिंथेटिक गैस, सिन गैस बोल के भी बुलाते हैं. दिस इज अबाउट दी वाटर गैस है. और नेक्स्ट अबाउट दी प्रोड्यूसर गैस है. प्रोड्यूसर गैस के अंदर CO इज प्रेजेंट अबाउट दी 20 to 30% है. नेक्स्ट अनकम्बसेबल गैस, इसके अंदर देर इज अबाउट 60 to 64% N2 रहता, और थोड़े क्वांटिटी में अबाउट 3 to 5% आपको हाइड्रोजन गैस मिलता. तो ये तीनों के मिक्सचर को क्या बोल के बुलाते हैं भाई? इसको प्रोड्यूसर गैस बोल के भी बुलाते हैं. वाटर गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, इनके कंपोजिशन लिखो बोले तो यू हैव टू राइट दिस कंपोजिशन. दिस इज अबाउट द वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस. एंड द लास्ट थिंग लेफ्ट इन दिस चैप्टर, जो लास्ट है वो सिलिकॉन्स के बारे में. व्हाट आर सिलिकॉन्स? सिलिकॉन्स क्या है आखिर? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सिलिकॉन्स? अब जब से मैं आपको क्या समझाया, सिलिकेट्स के बारे में समझाया. Then about the silicones, organosilicon compounds are called as the silicones. जैसा कीटोन्स है भाई, RC डबल बॉन्ड OR, इसको क्या बोलते हैं अपन? कीटोन्स बोलते हैं. और सिलोन्स किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक है. यहाँ SiO देखिए, R2 SiO यूनिट जिसमें रहते उनको क्या बोलते बोले तो सिलिकॉन्स बोल के बुलाते. ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज silicones. Once again I am repeating, silicon compounds, organosilicon compounds are known as silicones. These are resembles what with what? Ketones. Therefore कीटोन्स के जैसे रहते तो इनको सिलिकॉन्स बोल के बुला रही है. सिलिकॉन रहता है इंस्टेड ऑफ कार्बन, या SiO रहता, CO के बदले में SiO रहता, दोनों अल्काइल ग्रुप्स के बीच में. These are called as ketones and these are called as silones or silicones. This is about the introduction of silicones. Now then how these silicones are prepared? Silicones कैसा prepare करते हैं? Silicones are prepared by treating the alkyl halide. Alkyl halides are heated with what? A silicon, a CH3Cl. I am taking the 2 moles of CH3Cl. Okay, it is heated with the Si in the presence of the copper के साथ, copper catalyst के presence में. When alkyl halides are heated with the silicon से मिला दिए तो देखिए बेटा 2 CH3 ग्रुप्स मैं ऐसा लिख ले रहा हूँ मैं. Now next 2 Cls को, सिलिकॉन की वैलेंसी ये 4 है, तो 2 Cl से बॉन्ड्स हो गए, 2 CH3 से बॉन्ड्स हो गए. हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस, इसको मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ तो ये हाइड्रोजन से मिल जाता, ये 2 Cl चले जाके आपको यहाँ पे क्या फॉर्म होता भाई? CH3Si, जहाँ पे Cl है वहाँ पे OH आता, डाइओल फॉर्म होता. ओके, ये CH3 है. ओके, now then silols are you will get this one, diols form हो रहे. Now then upon the polymerization of this monomer, इसको polymerization करे तो we will get the compound polymer form होता. यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए कैसा polymerization हो रहा. मैं यहाँ पे CH3 ले लिया और यहाँ पे Si ले लिया और फिर यहाँ पे CH3 ले लिया और यहाँ पे OH ग्रुप ले रहा हूँ, यहाँ पे OH ग्रुप ले रहा हूँ, ये डायोल्स है. फिर इनको क्या कर रहा हूँ मैं? और एक मॉलिक्यूल से कंबाइन कर रहा हूँ. देखिए Si, CH3, यहाँ पे OH लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा भाई, वाटर मॉलिक्यूल चले जा रहा और फिर एज ए रिजल्ट ऑफ दिस यू विल गेट दिस यूनिट. देखिए ऐसा पॉलीमराइजेशन हो रहा हो. CH3, यहाँ OH है, फिर उसके बाद यहाँ O आता, फिर उसके बाद फिर यहाँ Si है, यहाँ CH3OH.
ये प्रोसेस लंबा चलता ऐसा, as a result of that you will get the big polymer of the condensation of these two monomers. दोनों मोनोमर्स को मिला दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते और इन दोनों ऐसे बॉन्ड से SI बॉन्ड से जुड़ते जाते. As a result of that you will get the big polymer. That polymer is called as silicone बोल के बुलाते, silicones बोल के बुलाते. This is about the preparation of the silicones. तो ये सिलिकॉन्स के प्रिपरेशन के बारे में, भाई सिलिकॉन साइक्लिक सिलिकॉन्स है, ओपन चेन है, शीट सिलिकॉन्स है. तो व्हाट एवर इट मे बी, दिस सिलिकॉन्स और द वाटर रिपेलेंट मटेरियल्स है, वाटर से नफरत करते. तो इनको वाटर प्रूफ जैकेट्स के प्रिपरेशन में, वाटर प्रूफ पेपर्स के प्रिपरेशन में, और ये सिलिकॉन्स को एनामल्स के प्रिपरेशन के अंदर, पेंट्स के प्रिपरेशन के अंदर यूज करते, वाटर प्रूफ रबर के प्रिपरेशन के अंदर भी यूज करते. ओके, सो ऑयल सील्स वगैरह है, इनके प्रिपरेशन में भी सिलिकॉन्स आर यूज. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, organosilicon compounds are called as the silicones. These are resembles with the ketones. Okay, how these are prepared? When the alkyl halides are heated with the silicon in the presence of the copper, of the heating of these two materials in the presence of the copper, we will get the dihalo compounds. Hydrolysis of this, hydrolysis of that, we will get the diols, silols बोल के भी बुलाते. Further polymerization of this diols, you will get the polymer that is called as the silicone, in which SI bonds are present. These are known as the silicones. Silicones are of three types: sheet silicates, open chain silicates, and cyclic silicates. Silicones. Silicones are of three types: open chain and cyclic and sheet silicones. So whatever it may be, silicones are used for preparing the waterproof material. Waterproof jacket के अंदर, waterproof paper के अंदर preparation में use होते. Now oil seals के preparation में, enamels paints के preparation में silicones को use करते. These are the uses of the silicones. So I was covered everything in this chapter. Almost all important questions are over in this chapter. फोर्थ ग्रुप के important questions में BSAQs है और SAQs है. SAQs में डायमंड एंड ग्राफाइट ही आता है एग्जाम में, जब सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स भी आ सकता. ये दो important SAQs एंड रिमेनिंग जब से हम जो पढ़ाए वो BSAQs में आते हैं. और देन फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप एलिमेंट है. So this is the last chapter in our syllabus. I was covered all those chapters. I was covered all the important questions in that chapters. So last chapter is left. What is that? That is the third A group elements. Third A group. Third A group. Okay. So these are the P block elements present in the 13th group of the periodic table. Elements those are having 3 electrons in their last shell are called as third A group elements. Which are those? Which are having 3 electrons in their last shell. First element in this is the boron. After that aluminum. Next one is the gallium. Next one is the indium. And last one is the thallium. These are the names of this third A group elements. Now then एटॉमिक नंबर लिखना है तो ग्रुप नंबर को 2 मिलाओ, फर्स्ट एलिमेंट का नंबर आता 5, फिर उसको 8 मिलाओ, नेक्स्ट एलिमेंट का नंबर आता, फिर उसको 18 मिलाओ, नेक्स्ट एलिमेंट का नंबर आता, फिर 18 मिलाओ, नेक्स्ट एलिमेंट का नंबर आता, फिर 32 मिलाओ, नेक्स्ट एलिमेंट का नंबर आता. ऐड करके देखना तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p1. इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो 3s2 3p1 आता, इसका 4s2 4p1 आता, इसका 5s2 5p1 आता, इसका 6s2 6p1 आता. Whatever it may be, shell numbers are changed, but number of electron in the last shell is 3 only. तो 3 इलेक्ट्रॉन जिसके लास्ट शेल में है उनको क्या बोल के बुलाते, थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स बोल के बुला रहे. थर्ड ए मीन्स व्हाट, दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट्स है present in the 13th group of the periodic table. Those elements are boron, aluminum, gallium, indium and thallium. In this group, boron is the non-metal and remaining is the remaining are the metals. Boron,
This is the first element, that is the non-metal. Okay, so it has giant polymeric shape, therefore a boron is having abnormal melting and boiling points. What is the reason? बोरॉन जेंट पॉलीमरिक शेप में रहता है, इसीलिए उसको abnormal melting and boiling point रहते हैं. ये ग्रुप में ट्रेंड्स फॉलो नहीं होते, तो इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स है बोरॉन से लेके गैलियम तक डिक्रीज होके फिर उसके बाद में इंक्रीज होते. गैलियम इज हैविंग लेस मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू. ड्यूरिंग द समर गैलियम मेल्ट्स एंड प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट. गैलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज समर लिक्विड बोल के बुला रहे हैं. सो इट इज यूज्ड फॉर पायरोमेट्रिक मेजरमेंट. टेम्परेचर मेजर करने के वास्ते गैलियम को यूज करते. तो ये इंट्रोडक्शन हो गया भाई. द लास्ट एलिमेंट दैट इज द थैलियम. थैलियम एग्जिबिट्स इनर्ट पेयर इफेक्ट. इट एग्जिबिट्स ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. मोर एटॉमिक साइज की वजह से ये मेटल है. लास्ट शेल के ns2 mt1 से खाली p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते. s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन द बॉन्डिंग. So due to the inert pair effect, thallium exhibits +1 oxidation state. So what is the inert pair effect? अगर पूछ लिया तो क्या लिखते हैं भाई? What is the inert pair effect? ns orbital, outermost shell s orbital electrons are not participate in the bonding. This is called as inert pair effect. Due to the inert pair effect, thallium exhibits +1 oxidation state. This is the one important definition in the third A group. थर्ड ए ग्रुप में व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट बोले तो ये लिखना है आपको. एक एग्जांपल ले लेना. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट मींस लास्ट शेल ns orbital electrons are not participated in the bonding. Those are called as that is called as inert pair effect. Last shell ns orbital electrons are not participate in the bonding. It is called as inert pair effect. Example, thallium exhibits +1 oxidation state. Then about the minerals of the aluminum. Aluminum के ओर्स के बारे में लिखो बोलता. Aluminum के ओर्स में एक और है भाई Na Al2O3.2H2O. It is called as क्या बोल के बुलाते भाई? बॉक्साइट बोल के बुलाते. Na3Alf6 है, इसको क्या बोल के बुला रहे हैं? क्रायोलाइट बोल के बुला रहे हैं. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द बॉक्साइट एंड इट इज द क्रायोलाइट. चलो भाई, फर्स्ट वाला जो बोरॉन है, ये बोरॉन के ओर्स है. अभी एग्जाम में पूछता हूँ, राइट द ओर्स ऑफ बोरॉन. बोरॉन के ओर्स के बारे में लिखो बोल रहा. नो, बोरॉन के ओर्स में फर्स्ट वन इज द बोरॉक्स. बोरॉक्स इज द वन ओर. ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? Na2B4O7.10H2O. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द बोरॉक्स. बोरॉक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7 is the formula of the borax. Now next, उसके बाद में कैलमनाइट. Ca2B6O11. This is the formula of the what? Calamite. Calamite का formula है Calamite is the second ore. Calamite, first one is the borax. Na2B4O7.10H2O. That is the formula of the borax. Now calamite is the Ca2B6O11. Ca2B6O11 and .5H2O. This is the formula of the calamite. These are the ores of boron. फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ भाई मैं. एल्यूमिनियम के जो ओर्स है, बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है. बॉक्साइट Al2O3.2H2O, क्रायोलाइट Na3Alf6. ओर्स ऑफ बोरॉन. बोरॉन के ओर्स है, फर्स्ट वन बोरॉक्स Na2B4O7.10H2O, कैलमनाइट Ca2B6O11.5H2O. these are the ores of the boron. ये बोरान के ओर्स एंड एल्यूमिनियम के ओर्स के बारे में पढ़ाए हम. देन फिर उसके बाद एक ग्रुप में और क्या आने वाला है? कैटनेशन बोला मैं. कैटनेशन वो ग्रुप से आता है. इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला. तो इम्पोर्टेंट 2 SAQs आर देयर इन दिस ग्रुप. 2 इम्पोर्टेंट SAQs है भाई वो. विच आर दोस? फर्स्ट वन इज द बोरॉक्स बिट टेस्ट है. बोरॉक्स बिट टेस्ट. This is the one important question. And the second one is what? Structure of diborane.
स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन ये एक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन समझा रहे हैं आज, और ये बोराक्स बिट टेस्ट भी समझाते हैं बेटा। तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर आ सकता, बोराक्स बिट टेस्ट परसों एनुअल एग्जाम में पूछा है ना, राइट अबाउट द बोराक्स बिट टेस्ट। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे क्यू से थर्ड ग्रुप में इंपॉर्टेंट है, और एक एक भी क्वेश्चन है लुईस एसिडिक नेचर ऑफ दिस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, नहीं तो AlCl3, these are Lewis acids. Explain the Lewis acidic nature of the BF3 or AlCl3. These are acts as the Lewis acids. तो इसके बारे में थोड़ा जस्टिफाई करो, एक्सप्लेन करो बोल के बोल रहा हूँ। So these are the three important questions, three important SAQs in this chapter. Third A group elements में ये तीन questions important है. First one is the borax bit test, second one is the structure of diborane, and third one is what? Third one is the explain the acidic nature of the BF3 AlCl3. So this is another important question in this. Yes. एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा मैं। फर्स्ट वन बोराक्स बिट टेस्ट है, बोराक्स बिट टेस्ट। सो जनरली दिस बोराक्स इज द सब्सटेंस है, बोराक्स वाइट कलर का सब्सटेंस है। व्हेन बोराक्स इज हीटिंग, बोराक्स को हीट कर लिया Na2B4O7.10H2O। upon heating of this borax that forms bulky mass, opaque mass को फॉर्म करता। ओके, इट लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल्स भाई, सोडियम टेट्राबोरेट बोल के बुलाते। ओके, इट लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये फॉर्म होने वाला है, दैट इज द ओपेक मास इज फॉर्म व्हेन बोराक्स इज हीटेड, दैट गिव्स द ओपेक मास कॉल्ड एज सोडियम टेट्राबोरेट। So that gives the opaque mass. Now then after that this opaque mass Na2B4O7, further heating of this forms the borax glass 2NaBO2 plus B2O3। इसके मिक्सचर को क्या बोलते बोले तो बोराक्स ग्लास बोल के बुलाते। ओके, you will get this one, borax glass form होता। Now this borax glass when treated with the metallic radicals भाई B2O3 है, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, कौन से भी एक मेटालिक ऑक्साइड को मेटालिक रेडिकल से मिला रहा हूँ, कोबाल्ट ऑक्साइड है, निकल ऑक्साइड है, इन लोगों से मिला दे रहा हूँ मैं। तो दैट गिव्स द डिफरेंट कलर, अलग अलग मेटालिक रेडिकल से अलग अलग कलर देता। तो ये बोराक्स को ये जो बोराक्स मटेरियल है ना, इसको बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के वास्ते यूज करते हैं। सो दिस इज द टेस्ट इज कॉल्ड एज द बोराक्स बिट टेस्ट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, व्हेन बोराक्स इज हीटेड, अपॉन हीटिंग ऑफ दिस बोराक्स दैट गिव्स द ओपेक मास, गिव्स द सोडियम टेट्राबोरेट, फर्दर हीटिंग ऑफ दिस that gives the borax glass. What is the borax glass? NaBO2 plus B2O3 is called as the borax glass. Now then when this borax glass is heated with the or treated with the basic radicals, that gives the bid color bid COBO3 taken 2 times. This is the blue color bid is formed, 2COBO3 taken 2 times. You will get this one. It gives the different colors with the डिफरेंट मेटालिक ऑक्साइड से। कोबाल्ट ऑक्साइड से ब्लू कलर बिट देता और दूसरे से अलग कलर देता, आयरन से येलो कलर देता, वट एवर इट मे बी। सो दिस इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स। कौन सा मेटल है, गोल्ड से एक कलर दे रहा, निकल से एक कलर दे रहा, तो डिफरेंट मेटालिक रेडिकल से अलग अलग कलर दे रहा। तो ये बोराक्स को कहाँ यूज कर रहे हैं, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेटालिक रेडिकल्स। दिस इज यूज्ड, this test is known as the borax bit test बोल के बुलाते हैं। What is this test? Borax bit test, borax bit test। This is about the first important question, borax bit test। तो borax bit test में क्या पढ़ना है, when borax is heated that gives the opaque mass, now then further heating of that gives the what, borax glass। when metallic radicals are
treated with this borax glass, you will get the color bits. Okay, that gives the different colors with the different metallic radicals. अलग अलग metallic radicals से अलग अलग color देता. This is about the borax bit test. Next about the acidic nature of the AlCl3 and BF3. और एक डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बच जाता है. डाइबोरेन का स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करते हैं. इससे आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ग्रुप के हो जाते हैं बेटा. अभी थोड़े कुछ भी BSAQ रहते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करते हैं. So I'm explaining about the Lewis acidic nature of the AlCl3 or BF3. Very simple. You see that on the valency shell of the boron there are 3 electrons are there. Boron atomic number is 5. Electron configuration 1s2, 2s2, 2p1 is the configuration. So boron is having how many shells? 2 shells. First shell contains 2 electrons. In the third shell, in the second shell 3 electrons are there. So when it is combined with the halogen, ये देखिए फ्लोरीन से मिल गया तो देखिए इस तरीके से टोटल 3 कोवलेंट बॉन्ड्स आ रहे हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं. सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, those are the 6 electrons are present. Only 6 electrons are present in their large shell. Therefore, these are deficient electron. These are the examples for the molecules which are not obeys octet rule. ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करने वाले मॉलिक्यूल्स को एक एग्जांपल है. बिकॉज लार्ज शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्टेट रूल. बट इन दिस मॉलिक्यूल्स ऑन द बोरॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ BF3 ओनली 6 electrons are there. So it is in short of 2 electron to get the octet. Therefore it is electron deficient है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या करता भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला? इट टेक्स दी इलेक्ट्रॉन पेयर्स. इलेक्ट्रॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है. तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले को क्या बोल के बुलाते हैं? लुईस एसिड्स बोल के बुलाते हैं. इलेक्ट्रॉन ऑल दी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स आर द लुईस एसिड्स. फॉर एग्जांपल एक लिख के समझा रहा हूँ. Na3 इसके पास लोन पेयर्स है. BF3 है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की किल्लत है, इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्या फॉर्म होता है? Na3 BF3 मॉलिक्यूल फॉर्म होता. सो मैं यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ? BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, देयरफॉर इट एक्सेप्ट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन and it forms the coordinate covalent bond. Now then according to the Lewis theory, the substance which is able to accept the pair of electron is called as the Lewis acid. BF3, AlCl3 or BCl3, BF3, BCl3, BBr3 and BI3, all these are the Lewis acids. And not only this, these hydrides are also electron deficient. So acidic strength of this is, यहाँ पे acidic strength BF3 है ना, इसकी acidic strength BCl3 से भी कम रहती क्योंकि in the BF3 बैक बॉन्डिंग होता है. थोड़ा डिटेल से जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस. दीज आर हैविंग 6 electrons in their large shell. Therefore these are able to accept the pair of electron. The substance which are able to accept the pair of electrons are called as the Lewis acids. According to the Lewis theory, the substances which are able to accept the pair of electrons are known as Lewis acids. Which are able to donate the pair of electrons are called as bases. These are due to the deficiency of the electron. These accepts the pair of electron. Therefore, these third A group element halides are acts as the Lewis acids. AlCl3 and BF3. All these are the electron deficient compounds which are acts as the Lewis acids. This is about the acidic nature of the third A group element halides BF3, AlCl3. Next. I will explain the structure of diborane inshallah in next class.